Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%, also retains a GDP growth forecast for the fiscal 2023-24 at 6.5%. Around 50% of the 2,000 rupee notes deposited or exchanged, says RBI Governor Shaktikanta Das, and key domestic indices snap 4-day winning streak to close with losses of around 0.5%. भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में नहीं किया कोई परिवर्तन। रेपो दर 6.5% पर बरकरार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का पूर्वानुमान भी बनाए रखा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2,000 रुपए के लगभग 50% नोट बदलवा लिए गए और घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 सत्रों से जारी लिवाली का सिलसिला थमा। बिकवाली के दबाव में प्रमुख सूचकांक लगभग .5% रोके। In our top story, RBI today announced its second bi-monthly policy of this fiscal, and as expected, the Apex Bank preferred to maintain a status quo by keeping the key rates unchanged. Announcing the policy review, RBI Governor Shaktikant Das said the 6-member Monetary Policy Committee (MPC) decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility SDF rate remained at 6.25% and the marginal standing facility and the bank rate stand at 6.75% respectively. MPC also decided by majority of 5 to remain focused on the withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. The RBI governor said that consumer price inflation eased during March to April 2023 and moved into the tolerance band, declining from 6.7% in 2022-23. Headline inflation, however, remains above the target as per the latest data and is expected to be so according to the RBI's projections for 2023-24. Shaktikant Das said that as per the RBI's assessment, inflation will remain above 4% throughout 2023-24. He said that taking into account all factors and assuming a normal monsoon, CPI headline inflation is projected at 5.1% for 2023-24. The MPC kept the GDP growth rate at 6.5%. Dr. Sharma, what's your take on the policy rates remaining unchanged? What's the likely impact on the economy, especially when it comes to borrowing and lending? Yes, Arjun. I think this is a great move by the Reserve Bank of India. The pause in policy rates was expected because now inflation has come down significantly from its peak of April 2022. Now inflation is very much within the target band of Reserve Bank of India, that is 4 to 6%. And now we are at 4.7%, which is a great thing which has happened in India. Otherwise, so many economies like the large economies, the inflation impacted large economies are still facing the high inflation. Like United States, inflation is still at around 5%. In Euro area at around 7% and Germany more than 7%. So many economies are still in the quagmire of the increasing policy rates and facing the high inflation. But in Indian economy, the effective policy environment, the effectiveness of the repo rate has proven very strong, as with the increase of 250 basis points in the repo rate during the last 1 year. We have
reduce the inflation rate by 310 basis points, means 3.1% from its peak. So that is a great thing that with the support of government, with the supply side reforms and the monetary measures, we are able to tackle the inflation trajectory. And going ahead, the growth remains intact, as we have posted 7.2% for the last financial year. And for the current year again, we have great expectations that we will be somewhere between 6 to 6.8%, and the average mean growth rate is projected at around 6.5%. I think, in my view, the growth will surpass from the expectations for the current year also, because the activity of the April and May is very much intact, and all the economic indicators are moving ahead with a great zeal. And like the core infra, IIP, then the other indicators like financial indicators, the GST collections and the stock markets are in a great tandem. So going ahead, I think growth will remain intact, and growth is now becoming more and more strong each day with the support of reforms by the government. मौद्रिक नीति पर चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। पहले कुछ और इसी से संबंधित खबरें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि नागरिकों ने 2,000 रुपए के लगभग 50% नोट जमा करा दिए हैं अथवा बदल लिए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट चलन में थे। इनमें से 1,80,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट जमा करा दिए गए हैं या बदल लिए गए हैं। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि करीब 85% राशि आशा के अनुरूप बैंक खातों में ही जमा कराई गई हैं। बैंकों में नोट बदलने या जमा कराने से संबंधित भीड़ नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 2,000 का नोट बदलने या जमा कराने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंक अब रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ई रुपे वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके लिए नॉन बैंकिंग कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकेंगी। Dr. Sharma, what's your take on the other measures taken by the MPC, especially regarding e-vouchers and the RuPay card? What's your take on that in terms of the announcements by RBI Governor Shaktikant Das? Yes, Arjun, because all these developments are for the easy financial segment of the economy, because now the economy is very much in the great shape of the growth. So at this juncture, it becomes important that there must be more and more ease of doing transactions, and they are introducing the new reforms like the e-vouchers, and all these reforms are for the easier transactions in the economy, so that hassle-free transactions are there, and there is ease of making transactions. No, not any hassle to be faced by the people. यहां पर डॉक्टर शर्मा, हम बिल्कुल आम जो कह लें कि देश के नागरिक हैं, उनके नजरिए से समझना चाहेंगे कि ये जो घोषणा हुई है मौद्रिक नीति की, लगातार दूसरी बार कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो इससे आम लोगों की जो अपनी लोन की किस्तें हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, या बैंक में जो वो पैसा जमा किया करते थे उस पर जो ब्याज उनको मिला किया करता था उस पर कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा? क्या उनके नजरिए से यह नीतियां क्या बदलाव लाएंगी या नहीं लाएंगी? जी बिल्कुल मनोज जी, आपने पूछा है उसके मुताबिक कि जो सरकार ने अभी रिफॉर्म्स की, उनको सपोर्ट चाहिए थी कि इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी लेवल भी मेंटेन रहे। भले ही इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया था और हमें अपने रेपो रेट इंक्रीज करने पड़े, लेकिन उससे इकोनॉमी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन हमें मजबूरी थी कि हमें अपने रेपो रेट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना पड़ा, क्योंकि दूसरे बहुत सारे इकोनॉमीज, खासकर एडवांस इकोनॉमीज में रेट इंक्रीज हो रहे थे। तो एक जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है उसका एक पैरिटी मेंटेन करने के लिए भी हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, तो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर चुके हैं और इन्फ्लेशन अपने टारगेट लेवल पे आ चुका है, उसके लगभग नजदीक है लोअर बैंड के,
तो अभी रेट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो जो ज्यादातर लोग जो लोन के ऊपर कोई अपना कोई गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या फिर अपना पर्सनल पर्पज के लिए कुछ लोन लेते हैं, तो उनको अब जो लोन है और ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसा था कि हरेक महीने 1.5 महीने में रेट बढ़ते थे, तो जो लोन की जो दर थी, जो ब्याज दर थी, वो और बढ़ जाती थी, तो उनको ईएमआई में इजाफा हुआ देना पड़ता था। खास करके जो होम लोन है जिसमें कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट रहते हैं ज्यादातर, तो उसमें ज्यादा बर्डन आता था। कई जगह पे फिक्स लोन होता है, जैसे कि ये पर्सनल लोन्स है या ऑटोमोबाइल लोन्स है, तो लेकिन होम लोन में क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ेगा तो ये दर और बढ़ जाएगी, अगर कम होगा तो कम हो जाएगी। ईएमआई उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, तो उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आ रहा था। लगभग कोई जैसे ही वो बढ़ता था, तो जैसे 25 पैसे ब्याज की दर बढ़ी है या 50 पैसे बढ़ी है, तो उतना ही बर्डन उनको उस हिसाब से झेलना पड़ता था। लगभग जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था, तो उनके ऊपर लगभग जो भी रेट इंक्रीज हुए, तो उनकी ईएमआई में लगभग कोई 10,000 रुपए का फर्क अभी आ चुका था। तो इस तरीके से जो बर्डन है वो इंक्रीज होता है जब भी रेपो रेट इंक्रीज होते हैं। तो अभी वो अनसर्टेनिटी जो एक थी कि अभी पता नहीं कितनी देर तक आरबीआई आगे बढ़ाएगा, हो सकता है ये 7% तक ले जाए या 7.5 ले जाए, तो कुछ भरोसा नहीं है। जब भी इन्फ्लेशन के नंबर आते थे, तो इन्फ्लेशन उस टाइम पे या तो स्टिकी जोन में रहता था या फिर थोड़ा बढ़ के आता था, तो कई महीने ये दौर चला है। तो अब उस सब चीज में से जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई। अब लोगों को पूरा विश्वास हो गया है कि अब इन्फ्लेशन जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। अब जो सरकार के प्रयास हैं और जो आरबीआई ने उसको अच्छे से कर्व कर लिया है। अब इन्फ्लेशन जैसे आरबीआई का ही फोरकास्ट है कि 5% के आसपास इस जो फाइनेंशियल वित्त वर्ष है उसमें रहेगा, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है कि इन्फ्लेशन एकदम से सडनली एस्केलेट होगा और आरबीआई को फिर अपना रेपो रेट बढ़ाना पड़े। तो ऐसी जो संभावनाएं हैं वो सब रद्द हो गई है। तो एक स्वाभाविक माहौल बना है जो कि एक बहुत कंफर्टेबल है। भले ही अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आके स्टेबल हो गया है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा हाई है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी थी जो कभी और ना बढ़ जाए, तो वो लोगों के दिमाग से खत्म हो गई। Dr. Sharma, the RBI governor has appealed to the public to exchange their 2,000 rupee notes and not wait till the last day. But what's the reason for this policy in the first place? Just for the benefit of our listeners, how important it is that counterfeiting could also be one of the factors determining how this policy has been changed. Yes, Arjun, because this move, I think there was not any knee-jerk reaction by the RBI. This transformation is very smooth. They have given adequate time to the general public that they can deposit their 2,000 rupees notes by end September. So there is enough time to move ahead with a free mind and cool mind. There is no hurry. And people on the same shape are depositing their 2,000 rupees notes, and there is no hustle bustle in the market, and the system is very smooth. So that is appreciable that RBI has took a great decision for this smooth withdrawal of the 2,000 notes. So I think this will benefit the economy in the coming times as liquidity in the banking sector is increasing, and there will be more dispersal in the coming times in terms of the loans to the public. आइए खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 सत्रों से जारी लिवाली का सिलसिला आज थम गया और बिकवाली के दबाव में प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी घाटे में रहे। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 62,850 के स्तर से नीचे फिसल गया, वहीं निफ्टी भी 18,650 के स्तर से नीचे आ गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 294 अंक यानी 0.47% घटकर 62,849 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंक
यानी 0.49% नुकसान के साथ 18,634 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां पर अपेक्षाकृत छोटी और मझोली कंपनियों को थोड़ा सा अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.87% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.47% की कमी आई। Key domestic indices snapped a 4-day winning streak to close with losses of around 0.5% today. Sensex at the BSE settled below the 62,850 mark, while Nifty at the NSE ended below the 18,650 level. Sensex sank by 294 points, or 0.47% to finish at 62,849, and Nifty slipped to 92 points, or 0.49% to end at 18,634. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined by 0.87% and the small-cap index fell 0.47%. In the 30 companies pack of the Sensex, the shares of 6 companies appreciated while those of 25 declined. NTPC was the top gainer as it climbed 2.6%, followed by Larsen and Toubro adding 1.1% and Power Grid rising 1%. On the other hand, Kotak Mahindra Bank and Sun Pharma declined 2.7% each. Tech Pharma fell 2%. In sectoral indices, the BSE, 6 sectors logged gains while 14 witnessed losses. Power sector rose 0.9%, utilities 0.7% and capital goods gained 0.4%. On the other side, realty declined 1.5%, telecom fell 1.1% and auto slipped 1%. The overall market breadth was negative as shares of 2,059 companies fell, shares of 1,493 companies rose and a total of 116 shares remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 82 रुपए 57 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.85 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में पिछले 4 सत्रों से लगातार तेजी हम देख रहे थे, आज गिरावट है। इस गिरावट के पीछे गुरुवार का दिन होना माने, यानी सेटलमेंट वाला जो मामला है उसका असर हो सकता है, या फिर बाजार ने जो बैंक की नीतियां हैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया। क्या कारण हो सकते हैं आज की गिरावट के पीछे? देखिए मनोज जी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट से देखें तो उसकी तरफ से कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि कोई ऐसी नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया। और भले एक पॉजिटिव ही है कि आरबीआई ने रेपो रेट में पॉज किया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है, तो मार्केट ने उसको बड़े अच्छे से, अगर शुरुआत के आप सेशन को देखें तो मार्केट्स जो थी पॉजिटिव थी। लेकिन थोड़ा प्रभाव ये है कि ग्लोबल हेडविंड्स जिनको देख रहे हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में, अब जैसे यूएस में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही वाइड हो रहा है, अभी 6 महीने के स्तर से ऊपर चला गया है ट्रेड डेफिसिट, जिससे कि सीधे तौर पे जो है प्रेशर आता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, और ऊपर से ऑलरेडी जिनका जो डेट सीलिंग है उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, जिससे कि उन्होंने आगे परमिशन भी ले ली है कि वो अपना बोरिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन हेडविंड्स की वजह से मार्केट्स के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल मार्केट्स किसी एक कंट्री में जो कि एक लीडिंग इकोनॉमी है, जो वहां पे कुछ ऐसी हलचल होती है, तो उसका सीधा प्रभाव जो है इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज के मार्केट के ऊपर भी आता है, क्योंकि ज्यादातर जो फ्लोज है, जो फंड फ्लोज है, वो एडवांस्ड इकोनॉमीज की तरफ से मूव करता है। और दूसरा, आज एक एक्सपायरी भी थी, जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है जो थर्सडे को, तो उसकी वजह से भी मार्केट्स में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। जो जिस तरीके से रोल ओवर पोजीशंस आती हैं, या फिर अभी मार्केट कुछ तेज थी तो लोगों के अपने पोजीशंस जो थे वो प्रॉफिट बुकिंग में वाइंड अप किए, क्योंकि मार्केट्स जो है एक हाई के स्तर पर है। अभी जो निफ्टी 18,700-800 के लेवल पे एक अच्छे स्तर पे है, मतलब हाईस के ऊपर है, तो लोग यहाँ पे ऐसे लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि कई बार जो मार्केट सिचुएशन है, जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है, वो अब अनसर्टेन है। अभी उसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि आगे जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पूरे तरीके से सेटल हो गई है, तो लोगों का एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान इस लेवल पे आके बनता है। अब जब कोई और पॉजिटिव या फिर कोई स्टेबिलिटी
जो मार्केट्स में हम देखेंगे कि यूएस में इकोनॉमी में हम स्टेबिलिटी देखेंगे, तभी मार्केट्स जो है आगे की तरफ रुख करेंगी, नहीं तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे थोड़े करेक्शन के साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं। Dr. Sharma, the FII, FPIs were once again the net buyers in the market, but only to the tune of 212 crore rupees in equity trade today. That's a provisional data. Despite the volatility because of the weekly FNO expiry, there seems to be a great deal of optimism in the market after Jefferies announced that Sensex will cross 100,000 in 5 years' time. So what's your take on the market? Is it easy to take a call position right now that the Nifty will be crossing the call positions, which is higher? And what does this mean for the small investor? Yes, Arjun, as you said, this is very true that markets hold a great momentum and great potential going forward in the long-term trajectory. There is no doubt about it. Markets have to move forward with a great deal, and markets will post new highs in the coming times, and there is no doubt that markets will not be reaching the 75,000 or even 1 lakh in the coming times, because we are the growing economy, we are the fastest moving economy among the leading economies. But the headwinds which emerge on day-to-day basis, like some news-based volatility happens, that has happened today also, that some headwinds are coming, that trade deficit is widening, and that situation is still worrying in the US now. They are opening for the more borrowing. So all these factors impact the financial scenario, not only the originate economy like the US, but also impact the other financial markets. But there is no worry from our side that our growth is impacted or our inflation is becoming problematic. All the macroeconomic parameters, whether the growth or the inflation numbers or the other parameters like the growth of various indicators, like they are still in the positive trajectory. Even exports are, total exports are in the positive trajectory despite the problematic global economic situation and global demand. But these headwinds, the near-term, short-term volatilities will remain. That cannot be ruled out from the system. This will remain in the markets, because there will be news sometimes from the advanced economies that this has happened, that will impact the sentiment of the investors. But overall, markets are in a great tandem. The markets are in a positive mood for the long run, that they have to post new highs along with the trajectory of economic growth, which has been projected by IMF, that India is a bright spot in the global ecosystem, and we will grow more than 6% in the next 5 years. That is a great thing that is projected by the International Monetary Fund on the basis of various reforms undertaken by the government and support provided by businesses to the growth of the economy. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला-जुला रुख दिखा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 0.5% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.2% की तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% की कमी आई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक सकारात्मक रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.4% ऊपर चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 भी 0.01% ऊपर चल रहा था। Moving on to the U.S. Stock market, U.S. equities closed mixed yesterday ahead of key economic and policy events next week. Dow Jones Industrial Average gained 0.3%, while the Nasdaq Composite declined 1.3%. Similarly, the S&P 500 fell 0.4%. Dr. Sharma, why are we seeing a bullish trend in the U.S. markets as well, despite there was a minor crisis of the debt ceiling, which may or may not have been raised? It's been raised right now. What is it about the U.S. right now? Is it employment? Is it their corporate earnings? What is it? Yes, markets are very volatile actually
sometimes they show the great decline and sometimes they rise again to the previous level. So because of this uncertainty and the debt ceiling now almost settling, so markets are looking at some stability that something is going to happen stable in the coming days. And but still the worries remain as trade deficit has widened and other financial indicators may or may not be in the comfortable trajectory. So that this volatility will remain sometimes in the positive mood and sometimes in the negative. So, but there is no stability is in the coming times, because some news will come related to the financial matter. So we can't rule out the volatility in the market. With the bond yields in the money market and in the medium to long-term treasuries also fairly high, in the below 1 year it's more than 5%, as much as 30 years is still about 4%. What's your take on inflation briefly in the US? Yes, Arjun, because the yield will increase because they are not now allowed for the expansion in the debt ceiling, so they will borrow more. So that's why the yields will go up till they announce the adequate proportion of buying the debt, borrowings from the market. So the yield at this juncture are expected to rise more in the US economy. That's why the markets are impacted in the emerging economies like us. We are seeing a deceleration in the market because of the rising yield level in the US economy. And the Fed Reserve, how do you expect them to respond? Do you see them lowering their discount rate, repo rate? I don't see that they will lower the repo rate, but some stability is expected that they will also pause at this juncture because inflation worry still remains. Inflation is around 5%, so that will impact the minds of the Fed that they should now be in a pause situation rather than reducing or increasing the repo rate. Let's have a look at the oil market now. Oil rose today as worries over demand weakness and a global economic slowdown were offset by Saudi Arabia's pledged production cut and a potential pause to US interest rate hikes. In intraday trade, Brent crude was trading at $77.43 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $73.04 per barrel when reports last came in. Is there a concern by OPEC producers about a drop in prices? Saudi Arabia seems to have unilaterally have a production cut instead of OPEC taking a decision here. Yes, they are trying to maintain the prices at some stable level, but because the demand is not supporting the prices at the higher level, so they have to took some such kind of measures that the prices remain at the high level, but that is not going to happen because global growth and global demand is in a decelerating mode, and prices may see a great correction. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 19 रुपए घटकर समाचार तैयार किए जाने तक 59,484 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी जुलाई में आपूर्ति होने वाली 565 रुपए बढ़ोत के साथ 72,290 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना मजबूती के साथ चल रहा था। सोने का मूल्य $1,960.70 प्रति औंस और चांदी का मूल्य $23.79 प्रति औंस के आसपास चल रहा था। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. RBI keeps the repo rate unchanged at 6.5%. Also retains GDP growth forecast for the fiscal 2023-24 at 6.5%. Around 50% 2,000 rupee notes deposited or exchanged, says RBI Governor Shaktikant Das. And key domestic indices snap a 4-day winning streak to close with losses of around 0.5%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.